Today we will start our second unit, that is interferometry and limits, fits and tolerances. So first of all, what is interferometry or what is interference, that we will discuss. So these are the points that we will cover under this unit number 2, in which NPL interferometer, then flat mesh measuring of slip gauges, laser interference. So these are the types of interferometers using which we can find out the flatness of the different objects by using the optical flat. Okay, then second is the measuring surface finish of any object using a stylus probe, then Thomson and telesurf. So these are the instruments that we will use in order to find out the surface finish, and analysis of surface traces. Then in the next article, the design of gauges, in which we will discuss the types of gauges, then limits, fits and tolerances provided on the workpieces. Then comes the terminology for limits and fits, and lastly the Indian standards, in which we will discuss IS 919 1963. Okay, so let us start from the basic definition. What is interferometry? So interferometry is a technique in which electromagnetic waves, or sometimes we use light waves also. So these electromagnetic waves are superimposed, causing a phenomenon of interference which is used to extract the information. ओके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो फिर साउंड वेव्स भी रह सकते हैं कभी कभी, या फिर लाइट वेव्स भी रह सकते हैं. सो यूजिंग दीज वेव्स वी आर imparting, or we are superimposing these waves on the objects, and the reflected waves or reflected sound or reflected light coming from the object that we are gathering, or that we are recording at some point, and using that information we are finding out the how the surface finish is, or how the length or surface finish of that object. Okay, so now this interference, what is this interference, that we need to understand. So it is the phenomenon in which two waves superpose or superimpose to form a resultant wave of greater or lower or the same amplitude. Okay, इसका आपको अगर से एग्जांपल देखना है, तो दिस इज द डायग्राम और इमेज. यू कैन, इन द इमेज यू कैन सी water is there, and we are dropping two objects. So this is object number 1 and this is object number 2, and because of these objects what will happen, so it will produce, the object number 1 and object number 2, they will produce some ripples on the water surface, and these ripples, they interfere at this area, or across this area. Okay, so this area is known as the interference. Okay, so the common example is the ripples created when two objects are dropped into still water. The interference between the waves the intersection between the waves will display the interference. Okay, अभी जब कभी भी देखो आप, ये जो वेव्स रहेंगे उनका एक पर्टिकुलर शेप रहेगा. ठीक है, साइन वेव्स की तरह इनका एक शेप रहता है. ओके, लाइक दिस. ओके, या फिर ऐसा भी रह सकता है. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द शेप और डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव्स, वी आर गेटिंग or we are extracting some information. Okay, so what is the principle of interference? If two rays of same wavelength meet at a point, okay, सपोज करो दो वेव्स है, रेज है, उनका वेवलेंथ जहाँ पे एक पॉइंट पे
कौन सा भी एक पॉइंट पे अगर से वो मीट हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, so the mutual interference occurs and natural interference depends on the phase of the two waves at their meeting points. Okay, so ये जो है प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस का. So there are types of interferences. So this is the first type, that is constructive interference, and second is the destructive interference. यहाँ पे देखो अभी the wave, upper wave and the second lower waves, these waves are having same amplitude, sorry, same magnitude, and they are having same amplitude also, or you can say position also. Okay, the first wave is starting from the upper point and ending on the lower point. Again from the second you can see it is again start point of the two waves are same. Okay, so resultant of these two waves will form another wave which is higher in magnitude. ठीक है, आप इसका अगर से एक बीच में से एक लाइन अगर से ड्रॉ करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस और अलोंग द एक्सिस ऑफ द वेव, अगर से हम डिस्टेंस इसका क्रस्ट एंड ट्रेफ का अगर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस ये दोनों का, ठीक है, और ये जो तीसरा रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म हो रहा है उसका आप एक्सिस के अलोंग अगर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, सो एज कंपेयर टू द magnitude of these two or either of these two waves, the magnitude of this resultant wave is greater. Okay, and in the second destructive interference you can see the start point of the upper wave and start point of the lower wave are different. Okay, these are exactly opposite. The amplitude or phase of the first wave and second wave are different, but magnitude is same. Okay, the phase, there is a phase change but magnitude is same. Okay, when we add such waves, so it will form a straight line. Okay, it will nullify the resultant. क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर से ये वेव हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और ये पॉजिटिव वेव का अगर से हम ये नेगेटिव वेव के साथ अगर से ऐड कर देते हैं, so the resultant will be a flat line. Okay, so these are the two types of interferences. So first one is the constructive interference. Let us go to the definition. So it occurs along the medium where two interfering waves have a displacement or amplitude in the same direction. Okay, the amplitude or displacement of these two waves is in the same direction, and that's why it will produce a resultant of greater amplitude and greater magnitude. Okay, in the destructive interference you can see it occurs along the medium where two interfering waves have the displacement in the opposite direction. Okay, the displacement or the starting point of the upper wave and starting point of the lower wave are different, and that's why it will form a straight line. Okay, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है, अगर से इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं सो इट विल फॉर्म ए फ्लैट लाइन और जीरो लाइन. Okay, positive plus negative it will get 0. Then now you can observe this example. So in this example, first example, you can see the wave starting from point O. Okay, both the waves are starting from O. Okay, the first wave is A and second wave is B. Okay, the wavelength of A and B is same, but amplitude is different. Okay, amplitude means you can see one dotted line over here, that dotted line is the axis of the wave, so the distance of the peak point of A and the axis, the distance between these two will give you the amplitude. Okay, then the wave B will have this same axis as that of A, but the displacement is different. Okay, you can see the displacement of B wave is different or amplitude is different.
okay, and the resultant of these two is shown on the upper side, okay. On the top of this uh, two waves, you can see one r is there, and that r is nothing but resultant of a and b, okay. So when the two waves are of different amplitudes and that are in phase, so it will form such kind of pattern, okay. So let us see the description. If two rays are in same phase, then resulting in intensity will be the sum of the two intensities, okay. So addition of a and b, it will give you the uh, third wave, that is the resultant wave, okay. And if now you can see the second example. In the second example again, wavelength of wave A and wavelength of wave B are same, but amplitudes are different, okay. Again, both waves are starting from one point, but direction of wave A and direction of wave B are different, okay. Because of that, what will happen? Again, amplitude of wave A is different, amplitude of wave B is again different, okay. So because of that, what will happen? If the two rays are out of phase, okay, or two waves, now wave A and wave B are out of phase because they are starting from the same point, but they are traveling in the different directions, okay. And because of that, what will happen? The resultant intensity will be the difference of two intensities, that is intensity of A and intensity of B, okay. So because of this, what will happen? We will get some information at the end of this at the on the end screen of the interferometer. That information will be different. Now we will see, if the two rays have same amplitudes but are out of phase, then resultant will be 0 and a dark spot. And if the two rays having same amplitude are in the same phase and are in the same phase, then resultant will be the twice and the result will be a bright spot, okay. जब कभी भी देखो, अभी इसमें क्या है, अगर से क्या बोल रही है कि if two rays having same amplitude, रे A एंड रे B और वेव A एंड B दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बट अगर से वो आउट ऑफ फेज है, ठीक है। सो ये सेकेंड कंडीशन हो रहा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। एक्सिस अलोंग द एक्सिस अगर से आप इसका एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं तो एम्पलीट्यूड सेम है, बट these are out of phase, okay. This the wave 1 and wave 2 are out of phase, and because of that, what will happen? The resultant will be 0. 0 means this flat line, okay. And on the screen you can see a dark spot. I will show you some examples in the upcoming slides, so you can understand how the dark spots are formed, okay. And second point, you can see over here, if two rays having same amplitude, अभी ये केस हम देख रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है एंड आर इन सेम फेज, ओके। दोनों भी वेव्स जो है बोथ आर इन सेम फेज, देन रिजल्टेंट विल बी द ट्वाइस, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड देखो, इसका एम्पलीट्यूड देखो, और जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हाइट है ये दोनों का, let me show you. So this is the height, okay. So this much is the height of the wave A and this is the height of wave B, and you can consider the height of the resultant. So the addition, because of addition of these two amplitudes which are in same phase, so it will get a resultant which will have twice of the magnitude or twice of the amplitude of the parent waves, okay. And it will produce a bright spot. So because of this, the result or the
exact information that we are collecting on the screen, it will give you the bright spot. Okay. Now colored and monochromatic fringes. So these are the three types of fringe patterns that we observe or that we see on the screen. Okay, when we use the colored light, then we will get the fringe patterns as shown in the figures or as shown in the photographs A and B. And the third photograph is of monochromatic लाइट सोर्स. ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब क्या है कि इसमें से सिर्फ एक ही वेव्स जो एक कलर का सिर्फ हम वेव ले रहे हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके. एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो रहेगा उसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन होगा, वो स्क्रीन से हम क्या कर रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो सेपरेट करके जो लाइट जो है, लाइट सोर्स जो है उसमें से जो वेव्स पास हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वो जो लाइट होगा उसमें मिक्सचर होगा वेवलेंथ का. ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स और मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगा, तो ऐसे लाइट वेव्स क्या बोलते हैं उसको फिल्टर होके आएंगे कि जिसका वेवलेंथ और जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ clear image. Okay, the image A and image B are not as clear as image C. Okay, so in order to get such clear image, we will have to use this monochromatic light source. Okay, monochromatic light source में क्या होगा कि एक वेवलेंथ के एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाले जो कुछ भी लाइट होगा या फिर वेवलेंथ्स होंगे, वो ही वेव सिर्फ यहाँ से फिल्टर होके हमें लेना है. ठीक है, इसका कॉमन एग्जांपल आपको अगर से देखना है तो आप अगर से गॉगल्स खरीदी करने जाते हो तो तब वहाँ पे आपको पोलराइज्ड गॉगल्स भी मिलते हैं. ठीक है, क्या खासियत है पोलराइज्ड गॉगल की, तो उसमें सिर्फ आपको जो लाइट वेव्स आपके आँखों में जाने वाले हैं, ठीक है, उनको वो पोलराइज्ड ग्लास जो होगा वो उसको फिल्टर करके भेजेगा आपके अंदर, आँखों के अंदर. Okay, and because of that what will happen, we will not, or our eyes will not get harm. Okay, and that's why monochromatic light source is used over here. Okay, and monochromatic light source में information जो मिलने वाला है वो भी एकदम clear से होगा as compared to the colored light sources. ठीक है, colored light sources में आप देखो बहुत सारे colors आपको दिख रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट A and B में, बट इन द थर्ड इमेज और इन द C image you can see only two colors are there, one is red and another is yellow. Okay, so what is the description for A? So white light fringes where the two beams differ in number of phase of inversions. Okay, in the second इमेज वाइट लाइट, जो वाइट सोर्स है, इसका लाइट सोर्स है वो वाइट कलर का है दोनों को भी, ए इमेज और बी इमेज को. ठीक है, सो वाइट लाइट फ्रिंजेस वेयर टू बीम्स हैव एक्सपीरियंस द सेम नंबर ऑफ फेज इन्वर्जन्स. ओके, यहाँ पे डिफरेंट इन्वर्जन्स है, यहाँ पे सेम इन्वर्जन्स है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दिस काइंड्स ऑफ fringe patterns. Okay, and in the third image you can see the fringe pattern using monochromatic light. monochromatic light में अभी आप देख सकते हैं हम, ये जो रेड कलर के जो लाइट है, ये जो डार्क स्पॉट तैयार हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि डिफरेंट फेजेस में ट्रैवल होने वाले जो कुछ भी लेंथ्स है, वेवलेंथ्स है, उसकी वजह से ये डार्क स्पॉट तैयार हुआ है. ठीक है, और ब्राइट स्पॉट क्यों तैयार होता है, ये जो येलो कलर जो दिख रहा है, दैट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द wavelengths or because of the rays traveling in the same amplitude and which have same magnitude. Okay,
सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है और सेम मैग्नीट्यूड भी है, बिकॉज ऑफ दैट वी विल गेट द ब्राइट स्पॉट्स. Now types of interferometer. So Michelson interferometer, then Fabry-Perot interferometer, fringe counting interferometers are there, then NPL flatness interferometers are there, then Peter NPL interferometers are there. Okay, so these are the different interferometers, so out of which we will discuss the fourth, fifth and eighth one. Okay, that is NPL flatness interferometer, Peter NPL interferometer and laser interferometer.